In a bacterial cell, transcription and translation can proceed simultaneously because both these processes take place in the same cellular compartment. Because in bacterial cell there is no compartmentalization between cytoplasm and nucleus, because nucleus is not present in these cells. So the protein synthetic machinery can start reading 5' end of mRNA before the 3' end is finished to form. So as the transcription starts in the cell, a strand of mRNA is formed. On the 5' end of this strand, the protein synthetic machinery can attach and can start protein synthesis. So still the mRNA is being synthesized, the protein synthesis can start. While in eukaryotic cells, both these processes occur in different compartments. You know, transcription takes place in the nucleus, while the translation or protein synthesis that takes place in the cytoplasm. So there are different compartments where these two processes take place. So primary transcript is converted to mature mRNA before the protein synthesis starts in the cytoplasm. So in the nucleus, after transcription, a primary transcript of mRNA is formed. Then this premature mRNA is processed and it becomes mature, and then it is transported from nucleus to the cytoplasm. And in the cytoplasm, protein synthesis takes place. The segment of mRNA that codes for a polypeptide chain is called an open reading frame, or ORF, because the protein synthesis starts at a specific start codon and stops at a specific termination or stop codon. So there is a long transcript of mRNA. In this transcript there is a start codon and there is one stop codon. So on the whole transcript, the protein synthesis or translation will start from the point where start codon is present, and this synthesis will proceed and end at the point where 3' end is present. So the mRNA before the 5' end and after the 3' end of stop codon, means the mRNA strand before start codon and mRNA strand after stop codon, they are not translated. So the distance between start codon and stop codon, this is called open reading frame. A DNA segment corresponding to an open reading frame plus the translation start and stop signals for protein synthesis is called a cistron. So ये जो स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के दरमियान में जो mRNA का पोर्शन है, including stop codon and start codon, this portion is called cistron, and the mRNA encoding a single polypeptide is called monocistronic mRNA. ये जो सिस्ट्रॉन है, एक सिस्ट्रॉन, ये एक पोलीपेप्टाइड को ट्रांसलेट करता है, इसलिए ये इस किस्म का जो mRNA है इसे हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA. Although the terms cistron and gene are sometimes used interchangeably to describe bacterial DNA segments that specify polypeptides, the term gene has a broader meaning because it also includes the promoter region, जो कि इस स्टार्ट कोडॉन से पहले होता है, and applies to the DNA segment that code for RNA molecules such as tRNA and rRNA that are not translated. So सिस्ट्रॉन, जो हम जिस पोर्शन को सिस्ट्रॉन कह रहे हैं, सिस्ट्रॉन तो हमेशा ट्रांसलेट होगा और प्रोटीन बनाएगा, लेकिन जीन जो है वो सिस्ट्रॉन से ज़रा बड़ा है,
और इस जीन में कुछ प्रोमोटर रीजन भी आ जाता है। फिर इसके अलावा ये जीन जो है कभी कभी ट्रांसक्राइब करके टीआरएनए और एमआरएनए बनाते हैं, यानी कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोडक्ट्स हैं दे नेवर ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन्स। तो इसलिए जीन और सिस्ट्रॉन जो है ये मुख्तलिफ चीजें हैं। बैक्टीरियल एमआरएनए मॉलिक्यूल्स often contain two or more cistrons, thus are called polycistronic and are actually more common than bacterial monocistronic mRNA molecules. So तो बैक्टीरियल सेल में जो polycistronic mRNAs हैं ये ज्यादा हैं as compared to monocistronic mRNA. Each cistron within a polycistronic mRNA specifies a specific polypeptide chain. तो एक पूरा mRNA है जो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक है जिसमें कई प्रोटीन्स बनेंगी और इन पॉलीसिस्ट्रॉन में एक सिस्ट्रॉन जो है वो एक प्रोटीन बनाएगा। Furthermore, cistrons contained in polycistronic mRNA often specify proteins for a single metabolic pathway. तो नॉर्मली ये जो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है पूरा ट्रांसक्रिप्ट इस पे कई प्रोटीन्स बन रही हैं, लेकिन ये जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं वो एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में यूज होनी है। फॉर एग्जाम्पल, वन एस्कर्शिया कोलाई एमआरएनए हैज 8 सिस्ट्रॉन्स, ईच कोडिंग फॉर अ डिफरेंट एंजाइम required for histidine synthesis. So histidine synthesis is a whole pathway, and in this pathway if 8 enzymes are used in this pathway, 8 cistrons will be present in the polycistronic mRNA and each cistron will synthesize an enzyme for one step. Using polycistronic mRNA is a way for the cells to regulate synthesis of related proteins coordinately. तो जो रिलेटेड प्रोटीन्स हैं यानी कि एक ही पाथवे में यूज हो रही हैं उनको सेल सिंथेसाइज करता है और उनको रेगुलेट करता है कोऑर्डिनेशन में, ताकि वो सारे एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में सिंथेसाइज हों। कौन सा एंजाइम ज्यादा चाहिए, कौन सा कम चाहिए, किसके बाद कौन सा एंजाइम चाहिए, इस तरह से। विद अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल, the synthesis of several related proteins in similar quantities and at same time can be regulated by a single signal. तो एक ही सिग्नल से एक ही पाथवे में यूज होने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होती हैं सेम क्वांटिटीज में और सेम टाइम पे। In addition to reading frames and start and stop codons, other regions in mRNA are also significant. तो सिर्फ जो है वो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन और सिस्ट्रॉन ही नहीं होते, बल्कि इसमें कुछ और रीजन्स भी होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, mRNA ट्रांसलेशन रेयरली स्टार्ट्स एग्जैक्टली एट द 5' एंड एंड स्टॉप्स एग्जैक्टली एट द 3' एंड। यानी कि ऐसे नहीं होता कि 5' एंड से ये शुरू होके एक कोने से एक जो एंड है उधर से शुरू हो और पूरी होके आखिरी जो 3' एंड का कोना है वहां पे खत्म हो, ऐसे नहीं होता। इंस्टेड, इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ द फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए मे बिगिन hundreds of nucleotides from 5' RNA terminus. तो आरएनए का जो 5' टर्मिनस है उसके कई न्यूक्लियोटाइड्स के आगे आके जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। द अनट्रांसलेटेड आरएनए सीक्वेंस बिफोर द कोडिंग रीजन इज कॉल्ड द 5' अनट्रांसलेटेड रीजन और 5' यूटीआर और 5' लीडर। तो एमआरएनए का जो 5' वाला एंड है उसमें जहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी उससे पीछे पीछे जितना भी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड 5' यूटीआर। सिमिलरली जो अनट्रांसलेटेड सीक्वेंस दूसरी साइड पे है यानी कि स्टॉप कोडॉन पे तो सिंथेसिस रुक जाएगी और उसके आगे जो है वो कुछ पोर्शन है 3' एंड की तरफ, और ये जो पोर्शन रह जाता है दिस इज कॉल्ड 3' अनट्रांसलेटेड रीजन और 3' यूटीआर।
Polycistronic mRNA molecules also usually contain intercistronic sequences which are called spacers that are tens of bases long. तो ये जो polycistronic mRNA उनके दरमियान में कुछ spacers भी होते हैं जो कि तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग उनका डिस्टेंस होता है. तो इसमें आप देख सकते हैं ये दो एग्जांपल्स हैं. ये जो है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA है और ये मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA है. तो इसमें ये देखें ये जो रेड एरोज हैं ये हर सिस्ट्रॉन का स्टार्ट पॉइंट है. ये एक सिस्ट्रॉन, दो सिस्ट्रॉन और तीन सिस्ट्रॉन. तो इन तीनों के तीन अलहदा से स्टार्ट पॉइंट्स हैं और यहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो रही है. ये जो पीछे वाला रीजन है ये अनट्रांसलेटेड रीजन है. तो ये 5 प्राइम यूटीआर है. उसके बाद ये यहां पे आके स्टॉप सिग्नल है, यहां पे स्टॉप हो जाएगा और स्टॉप से लेके आगे 3 प्राइम एंड तक अनट्रांसलेटेड रीजन है विच इज कॉल्ड 3 प्राइम यूटीआर. और ये जो आप देख रहे हैं ये और ये दीज आर स्पेसर्स बिटवीन दी सिस्ट्रॉन्स. इसी तरह ये जो है ये एग्जांपल आप देख सकते हैं जी मोनोसिस्ट्रॉनिक. इसमें एक ही सिस्ट्रॉन है और इससे एक ही प्रोटीन बनेगी. ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका स्टॉप पॉइंट है. तो स्टार्ट से पहले ये 5 प्राइम यूटीआर है और ये जो है ये 3 प्राइम यूटीआर है. तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA से ये डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA से सिर्फ एक प्रोटीन बन रही है.